So good morning, everyone, and welcome to the morning meet. We'll start with technical and derivative updates first. So what we saw yesterday is Nifty did open with a sharp downtick of over 150 points, but again it found support near the 15,700 odd mark, and we retraced back to 15,800 mark. And even the broader markets, there is a mid cap and a small cap which were outperforming from the last couple of days. They too closed in the red. With a downtick of almost 0.3 percentage worth of point. Even the sectoral indices, we see the Nifty, auto, reality, and metal did close in the green. Metal continued its short covering move of past three trading sessions, while Nifty auto has been outperforming and it did continue to outperform mainly on the back of strong gains in M&M and Maruti. And on the flip side, Nifty Bank, FMCG, and Nifty IT closed comfortably in the red with a downtick of over a percentage worth of point. So what we have seen from past three sessions, Nifty is taking support near the 15,700 mark, but it is finding resistance near the 15,900 mark. And it is from past 3 days, it is closing near the 15,800 mark. So this could be the, I would say, lull before the storm. So it could give a sharp breakout in either direction, wherein if we close above 15,925, which is a recent swing high, then we may make a dash towards 16,100, 16,200 odd levels. While on the lower side, if we break 15,500 on closing basis, then we may go and retest the 52-week lows which we hit in this month, which is 15,183 odd levels. And even on Bank Nifty, it did open with a sharp downtick with a gap down of over 200 points, and it on by closing it still had 80 points worth of gap area still unfilled, so that is a bit negative. But the candlestick is very similar to a doji, so which is like which indicates indecision in the market or a pause in this current trend. We need to be careful. If we break yesterday's low, then that what is it, the selling can start, and we may go towards 32,800, 32,600 on an intraday basis. While if we close yesterday's gap area, then we may make a dash towards 33,400, 33,500 for this expiry. Then from the flows side, institutional and in the cash market, FI did have a small net sell figure of 851 crores, while DI had a net buy figure of 847 crores. And on the derivative front, what we have seen is yesterday Nifty futures OI did show some long liquidation to the tune of 1%. That is a reduction of 0.14 million shares. And now the total outstanding position stands at 15.06 million shares. Even the advance decline ratio was very comfortably in the favor of bears. The ratio was basically 1:3 for only one stock advance, while 3 declined. The Nifty PCR OI saw some uptick. It closed at 1.05 compared to its previous close of 0.98 levels. While on the option front, major additions happened in the put front. It happened in 15,600 and 15,700 strikes. So that indicates support for the today's derivative settlement. While the call writers were active in 16,100 and 16,000 strikes. So that indicates we may face resistance near the 16,000 mark, and we may see an expiry between these levels. Even the Bank Nifty futures total OI stands at 27.3 lakh shares against 26.3 lakh shares from previous trading session. While if you look at the rollover data, the rollover in the Nifty currently stands at 63%, which is lower than its 3-month average of 79%, while Bank Nifty rollover stands at 65% as compared to its 3-month average of 84%. So both the rollovers on Nifty and Bank Nifty are lower if we compare to the last 3 months average. Then security that is in FNO band is Sun TV, and the FIs in the futures market, they had a net sell figure in index futures were 2413 crores. And in index option, they had a net buy figure of 1503 crores. Stock futures, they had a small buy figure of 13.46 crores, while stock options, they had a net buy figure of 75.69 crores. And on the call front, in the technical report, we have given buy on NTPC. We can buy in the range of 140.5 to 141.5,
Stop can be placed at 137.5. Target is 148. While in the derivative report, we have given a put option in Kotak Bank 1620 put can be bought, that is July month, in the range of 42 to 47. Stop loss is 30. Target can be placed at 75. So that would be it from my side. And I'll pass it over to Bhavesh sir for further research updates. Over to you, sir. Yeah, hi, good morning. Few updates starting with the metal sector. So, yesterday, coking coal prices fell to 6 month low of $286 per ton. In March, we had seen a high of $700. So, this $700 price was very high. Generally, average has been around between 150 to $250. So, still not near its average, but nevertheless, coming off or coming down trend of coking coal will benefit some of the most of the steel Indian manufacturers in Q2 FY23, because in Q1 they would have bought a higher priced coking coal, so Q1 margins could be lower. Secondly, on NMDC, so NMDC shareholders and creditors have approved the demerger, so that is one more regulatory hurdle down. Thirdly, JSW Steel has decided that they will invest 10,000 crores towards controlling carbon emissions. So by FY30, so by FY30, matlab it's like long time away. So very slow, and the capex will be spent very slowly and steadily. It will not have much impact on company's financials in the next 3 4 years. Then on Somani ceramics, so Morbi ceramic industry will benefit as GCC countries removed anti-dumping duty. GCC country UAE actually has removed anti-dumping duty on ceramic tiles exported from India. So this is a major booster for ceramic industry. Somani is not a large in exports, but at approximately 4 to 5% of its exports come from UAE. And total GCC market is around 500 to 550 crores. So of which UAE is 100 crore. So this is positive for the industry as such. Secondly, on the Britannia and Jubilant Foodworks. So Britannia is likely to appoint Rajneet Kohli as its first CEO. Currently serving as a president and chief business officer for Domino's at Jubilant. So from Jubilant, he is likely to move to Rajneet, but all this is not official as of now. It is not filed in the exchanges. So we need to wait if it is 100% true. But it looks that media reports are suggesting, and if he joins, he will join. He will report to the MD, Mr. Varun Berry. Uh, we currently have a buy rating on Britannia, and even on Jubilant, we are very bullish with the target price of 766. Then there is an update on retail sector. So inventory levels at nearly dozen listed companies have surged by 50%. Uh, this is like kind of indicating that the purchasing power for Indian consumer has gone down slightly. So that's why there is an inventory built up. The last quarter of FY22 saw Trent and Go Fashion double their inventories, while even Page Industries, VMart, and ABFRL has increased stocks by 60-70%. Even TCNS, the inventory is higher. So this may be also be due to slowdown, but it may also be because companies are storing the goods in advance, so that they are, to that extent, they are insulated from volatile input prices. So input prices are continuously going up, as we are seeing, except that last 1 month we have seen commodity price fall sharply, but still on an average it is well above historical levels, led by mainly crude oil and even energy cost, which includes your thermal coal or coking coal, etc. But as of now, we have a buy rating on TCNS with a target price of 686. And so that's it from me. Over to you, Prabhakar sir, with that. Thank you, sir, and good morning, everyone. We'll see more further updates. PVR is going to start its CapEx cycle again, and we are now planning to open 125 screens in FY23. This is on to the because they are expecting their overall business in the coming quarters is going to grow. That is at ATP, that is average ticket price, and spending per head is also increased.
in compared to Q3 and Q4 FY 21-22. Earlier in FY 19-20, they had opened a record 87 screens. Now, and in 2021 and 2022, they had opened 29 screens. So they are now planning for 120. So that would be positive for PER. Secondly, if we see that Tata Motors is also planning to a chip solution with Renes, that is a Japanese-based firm, and this Renes will partnership with Tejas Networks, which is a Tata Group owned company, for a solution of including 5G also. So that this is better for because of chip shortage facing by the automobile sector. So it would be a boon for it. Thirdly, if we see then TVS Motors, TPG is planning to invest 300 million to fund its expansion of its EV business. And lastly, if we see then Tata Steel is going to bet on big technology development. They are going to invest 1,200 crore in next 3 to 4 years, and they are now going to enter into new material business other than steel, that is graphene, which is a mix from the plastic and the recycle business for the new products. So that's it from mine. I'll hand over to Prabhakar sir for more updates. Thank you. Thank you, Hitendra. Thank you, team. There is a plastic ban which will come effect on 1st July, and there are paper companies which will benefit. But I was looking at tin plate, which is trading around 340, which makes aluminium can. So this also will be a major beneficiary for that. And this stock has not corrected, this year. Where markets have corrected more than 18%, this stock is almost flat or slightly positive for this year in the last 6 months. So I think this is one stock to watch. Yesterday, Britannia held the AGM, and there are a lot of news in the media about Ranjit Kohli joining Britannia. But very important takeaway from their annual report is their concentration on dairy products. Dairy products today is less than 500 crore, but they want to grow it to 2,000 crore. And they are entering into cake, rusk and bread market in a very big way. And even in wafers and coins market, they want to make themselves a leader. In biscuit, they are one of the leaders, and Parle and Britannia are the leaders in biscuit segment. India saw $82.3 billion pending and completed M&A in the second quarter, which is the highest amount till today, which is being received. Akril, this company has completed expansion of 1.6 lakh unit of pots, kitchen sink at Bhavnagar plant in Gujarat. And with this, the capacity would move up from 8.4 lakh to 10 lakh units per annum. We have been tracking this company, Akrisal. Now they are doing very good. I think, in any correction, it'd be an opportunity to buy. Government has approved the deregulation of sale of domestically produced crude oil, which is very positive for Oil India, ONGC, Vedanta. Vedanta has merged with Cain. So, Vedanta also has Rajasthan crude producing region and Hindustan Oil Exploration. These are 4 companies which are having oil fields in India. Reliance has only gas field, not oil field. A Japan-based Renas Electric Corporation, a global leader in advanced semiconductor solution, has tied up with Tata Motors and Tejas Network for design, development, and manufacturing of semiconductor. Positive for Tejas and even for Tata Motors. The NMDC, shareholders and creditors have approved demerger of NMDC and NMDC stake, and the next process starts, which is very positive for NMDC. NMDC at 110 rupees is looking very attractive. Now there are few stocks which we are positive on for multiple reasons. One is Maharashtra Seamless. Bhavesh was discussing with me. He told us that the oil and gas segment is seeing a very good traction because of higher crude prices, and Maharashtra Seamless order book is very full. And even Britannia, there are a lot of changes happening in Britannia. I think the worst for Britannia is over,
and TVS Motor is the only stock where EV vehicle has been successful and they have not had any problem till now. So this is one more stock we like. Mahindra is one more stock we like. Rupee has hit 79, which is the lowest ever level for rupee. Weakness in rupee is positive for IT as a sector, but IT stocks are correcting because of slowdown or a recessionary trend in US. Sundaram Fasteners proposes to invest 750 crores, including investment in PLI scheme over the next 2-3 years in creating capacity for defense and wind energy part business. This was a statement made by the chairman in the AGM. And SEBI has barred the Paswanat developers from security market for 6 months. Very negative for Paswanat developers. Indus and Towers block deal, which is happening at a premium, which is positive for Indus and Tower. Indus and Tower dividend yield is more than 10%. This is one stock to watch for a bit, 1 to 2 years investors. US FDA has given nod for thymol millite used in glaucoma for Gland Pharma. So it is positive for Gland Pharma. Gland Pharma has not performed. I think if market starts to correct, pharma as a sector will start to rise. The Jindal Steel and Power MD has made a statement. He said steel prices likely to go up from July 1st on high input cost. So GSW Steel doesn't have iron ore mines or coal mines. So any raw material cost increase will impact them. Whereas SAIL and Tata Steel have captive mines, so they will benefit out of it. I think it is more positive for SAIL being a India standalone company. Now with that, over to Miraj, over to you. थैंक यू सर। ना हम लोग अभी एक कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। फर्स्ट अपडेट है पीवीआर के ऊपर। पीवीआर ने भी रिस्टार्ट किया है कि जो उनका कैपेक्स साइकिल है उसके ऊपर फोकस करने का, और उन्होंने प्लान किया है कि 125 स्क्रीन वो फाइनेंशियल ईयर 23 में ओपन करेंगे। उसके पहले उनका फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 में जो रिकॉर्ड था 87 ओपनिंग स्क्रीन का, वो ब्रेक करेंगे, ऐसा उनका प्लान है। और कंपनी ने अभी तक 29 स्क्रीन अक्रॉस 5 जो प्रॉपर्टीज है वो 2021 और 22 में ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो जो कंपनी का जो एक्सपेक्टेड बिजनेस है वो ग्रो होने वाला है कमिंग क्वार्टर्स में, तो हम लोग पॉजिटिव है पीवीआर के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स में जो जापानीज कंपनी है रेनेसेंस इलेक्ट्रॉनिक्स क्रॉप, उसके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डील किया है। और ये कंपनी जो डिजाइन और डेवलपमेंट और जो मैन्युफैक्चरिंग है सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और अभी ये दोनों ने पार्टनरशिप की है, तो ये जो सेमीकंडक्टर का सॉल्यूशन है वो डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी करेंगे, ऐसे कंपनी ने बोला है। और इसके अलावा ये पार्टनरशिप में जो रेनेसेंस है वो काम करेगी तेजस नेटवर्क के, जो तेजस नेटवर्क है टाटा ग्रुप की कंपनी, उनके साथ भी। और जो वायरलेस नेटवर्क का जो सॉल्यूशन है 5G के लिए, उसके ऊपर भी काम होगा। और जो ये प्रोडक्ट्स है वो इनिशियली इंडिया के लिए होगा और धीरे धीरे उनका एम है कि वो एक्सपांड करेंगे ग्लोबल मार्केट्स में भी। तो एक ओवरऑल तेजस नेटवर्क के लिए भी पॉजिटिव और टाटा मोटर्स के हिसाब से भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट अपडेट है टीवीएस मोटर्स के ऊपर। टीवीएस मोटर्स ने कल टीपीजी कैपिटल एंड केकेआर एंड कंपनी है उनके साथ टॉक किया। उसमें वो एटलीस्ट $300 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। और जो ये इन्वेस्टमेंट रहेगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस है उनका, उसके लिए होगा, वो एक्सपांशन करेंगे। तो टीवीएस मोटर अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल में सक्सेसफुल है और हम लोग पॉजिटिव है ये स्टॉक के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है टाटा स्टील के ऊपर। टाटा स्टील ने अभी एक जो न्यू बिग टेक्नोलॉजी है उसमें एंटर किया है और उनका एम है कि वो बीट करेंगे नेक्स्ट 3 to 4 years में। और जो फर्म का प्लान है वो अराउंड 1200 करोड़ जो ये न्यू मटेरियल है उसमें पंप करेंगे। और जो ये न्यू मटेरियल बिजनेस है वो शिफ्ट होगा लाइक ग्राफिन के लिए। और ये जो ग्राफिन मटेरियल है वो मिक्स है प्लास्टिक कैन रिसाइकल का, तो ये ओवरऑल न्यू ब्रांड प्रोडक्ट बनेगा, तो ये पॉजिटिव होगा। जीएसपीएल के जो
कंपनी ने बोला है कि जो स्टील के जो प्राइसेस है वो जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ेगी। तो ओवरऑल स्टील मेकर्स जो कंपनी है उन्होंने ऑलरेडी जो रिबास है उसकी प्राइस बढ़ चुकी है 2000 से लेके 55,000 पर टन इन द लास्ट 4 इयर्स में। तो जस्ट ये है कि जो इशू है कोल एंड हायर प्राइस जो कॉइल प्रेशर है उसके हिसाब से एक ही इशू है स्टील के लिए, बट अभी नेक्स्ट जुलाई में हाई इनपुट कॉस्ट से ये प्राइस बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट अपडेट है ये कल जो कुकिंग कॉल की जो प्राइस थी वो 6 मंथ्स लो ट्रेड हुई है और जो प्राइस है वो $286 पर टन है। सो अभी हम लोग शार्प करेक्शन देख सकते हैं मार्च से लेके अभी तक। तो जो हाई था वो अराउंड $700 टन था और अभी $286 है, तो वो काफी लो है। और हम लोग ये मानते हैं कि ये जो प्राइस गिर रही है उसका फायदा स्टील मेकर्स जो कंपनी है उनके लिए होगा, जो इंडियन स्टील मेकर्स कंपनी है। नेक्स्ट अपडेट है कल सोमानी सिरामिक्स का इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने बोला कि जो यूएई है उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी है सिरामिक टाइल्स के ऊपर जो एक्सपोर्ट के लिए लगती है इंडिया से, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है। तो ये मेजर बूस्ट रहेगा कंपनी के लिए और जो एक ओवरऑल रिलीफ रहेगा जो इंडस्ट्री है जीसीसी जो नेट इंपोर्ट्स करती है टाइल्स उसके लिए। और सोमानी ये जो कंपनी है वो लार्ज एक्सपोर्ट नहीं करती है, बट जो उनका जनरेट रेवेन्यू होता है उसमें से यूएई में जो एक्सपोर्ट होता है वो 4 to 5% है उनका जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उससे। और कंपनी ने बोला है कि लास्ट ईयर से वो वॉल्यूम ग्रोथ उनका लाइक बढ़ेगा। तो ओवरऑल उनका जो अभी स्ट्रॉन्ग सेटअप है साउथ और नॉर्थ मार्केट में और वेस्ट में थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे बढ़ रहा है और जो उनका एक्सपांडेड कैपेसिटी है उसके कारण रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट है कल ब्रिटानिया की एजीएम हुई थी, उसमें जो रंजीत कोहली है वो स्टैंड अलोन चीफ एग्जीक्यूटिव उनको अपॉइंट किया है और ये पहले प्रेसिडेंट और चीफ बिजनेस ऑफिसर है डोमिनोज के जुबिलेंट फूड में। और कोहली डायरेक्टली एमडी सर को वरुण बेरी को रिपोर्ट करेंगे। तो ये ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट एक्सचेंज पे अभी तक आया नहीं है, बट कल ही इसका इम्पैक्ट है हम लोगों ने जुबिलेंट फूड पे देखा था, स्टॉक नीचे गिरा था। तो ओवरऑल हम लोग ब्रिटानिया के ऊपर भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट अपडेट है जो रिटेल सेगमेंट है उसके ऊपर जो इन्वेंट्री है जो इंडियन रिटेलर्स की वो सर्ज हो गई है 50% मार्च क्वार्टर में कंपेयर करेंगे जो लास्ट ईयर के हिसाब से। सो ओवरऑल जो ट्रेंड को फैशन उनकी जो इन्वेंट्री लेवल्स थी वो डबल हो चुकी है। इवन बी मार्ट और एबीएफआरएल की भी इंक्रीज हो चुका है स्टॉक 60 to 70% से। तो ओवरऑल हम लोग ये स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है प्लास्टिक जो बैन है वो 1 जुलाई से होने वाला है, तो पेपर इंडस्ट्री के लिए एक बेनिफिट रहेगा। पर इसके अलावा भी एक टीम प्लेट करके कंपनी है जो करंटली G40 पे ट्रेड कर रही है, ये एल्यूमिनियम कैन बनाती है, तो ये बेनिफिशियल रहेगा। और ये स्टॉक भी है कि ये ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है ये मार्केट में, तो आप ये स्टॉक को ध्यान में रख सकते हो और देख सकते हो। ब्रिटानिया के एजीएल में उन्होंने बोला है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन करेंगे। पहले 500 करोड़ का उनका ये था, अभी वो उनका प्लान है कि वो 2000 करोड़ करेंगे और बेसिकली वो फोकस करेंगे वेफर्स ब्रेड्स ये वाले सेगमेंट के, और जो बिस्किट में वो ऑलरेडी लीडर कंपनी है। एक्रिजल करके एक कंपनी है, उन्होंने कल एक्विजिशन कंप्लीट किया है 1.6 लाख यूनिट्स का। तो ये एक अच्छी कंपनी है और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी जैसे ही मार्केट में करेक्शन और कंपनी में थोड़ा बहुत करेक्शन आया तो। गवर्नमेंट है उन्होंने जो अप्रूव किया है जो डीरेगुलेशन है डोमेस्टिक जो कंपनी जो क्रूड ऑयल बनाती है उनके लिए, तो ये पॉजिटिव रहेगा लाइक ओएनजीसी के लिए, वेदांता के लिए, ऑयल इंडिया के लिए। कल एनएमडीसी के जो शेयर होल्डर्स है और बोर्ड ने डीमर्जर का अप्रूवल दे दिया है और अभी नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगी और हम लोग ये डीमर्जर का फायदा बहुत ही कंपनी को होने वाला है और हम लोग ज्यादा पॉजिटिव है ये कंपनी के लिए। अभी जो प्राइस ट्रेड कर रही है कंपनी की वो 110 है और जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव है।
तो आप NMDC के यहाँ ध्यान दे सकते हो। इसके अलावा महाराष्ट्र सिमलेस कंपनी है, तो ऑयल एंड गैस सेगमेंट जो सिलेंडर का है उसमें ये काफी अच्छी कंपनी है और इसका ऑर्डर बुक भी ऑलमोस्ट फुली है। इसके अलावा हम लोग को ब्रिटानिया जो TVS मोटर है जो EV सेगमेंट में अभी सक्सेसफुल है, और ब्रिटानिया का कल AGM हुआ, अभी तक का उनका जो वेस्टर्न पार्ट था वो अभी हो चुका है, और M&M है ऑटो में, ये स्टॉक पे हम लोग पॉजिटिव है, आप ध्यान दे सकते हो। रूपी ने कल 79 का हिट लो किया है, बट वीकनेस जो है रुपीज में ये पॉजिटिव रहेगा IT के लिए, बट जो ग्लोबल फैक्टर है वो भी मैटर करते हैं। ग्लोबली US में रिसेशन आने का संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा सेबी ने पर्सनल डेवलपर्स के ऊपर बैन किया है 6 मंथ्स के लिए, तो ये नेगेटिव रहेगा कंपनी के लिए। इंडसन टावर भी एक कंपनी है जो 10% डिविडेंड यील्ड देती है कंपनी, तो 1 to 2 ईयर के इन्वेस्टमेंट के लिए आप ये स्टॉक के ऊपर ध्यान दे सकते हो। ग्लैंड फार्मा है, उनको US FDA का एक ऑब्जर्वेशन का अप्रूवल मिला है, तो ये पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए, और जैसे ही मार्केट थोड़ा इधर से राइज होने का स्टार्ट करेगा वैसे ही फार्मा सेक्टर भी राइज हो सकता है, इसमें हम लोग को लग रहा है। That's it from our end. Thank you everyone for joining the con call. Have a nice day.